193 on Dish TV and number 2 on Free Dish. Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Uzma Jafri. Let's see what we have lined up for you this week. Pakistan's indoctrination of youth poses serious security challenges for people in POK and Gilgit-Baltistan. Retired soldiers in Gilgit-Baltistan protest against low pensions. J&K government organizes mega job fair to boost employment. Jammu city gets its first integrated command and control center. And in our special section of Incredible India, we'll take you to the northeastern city of Kohima, where people of the Konyak tribe celebrated the much-awaited Airlong festival with great zeal and fervour. Ever since its inception in 1947, Pakistan has left no stone unturned in its endeavour to push a preposterous narrative of history, one that serves the whims and fancies of an anti-India theocracy. Such spiteful narratives can delude gullible minds and radicalize them into fanatics and terrorists. In a recent interview, Amjad Ayub Mirza, a human rights activist, highlighted the modus operandi of these sinister activities of Pakistan. We have a report. After realizing that its military power stands trivial in front of the Indian army, Pakistan has yet again started using its nefarious plans to indoctrinate the youth of POK. Their aim is to turn them into terrorists who would later help Pakistan wage a proxy war against India. The resurgence of state-funded extremist groups like Jamiat-e-Tulba means that any call to preach ethnic or religious diversity will be discouraged and trampled upon. These groups not only bring in cash flows from organizations around the world, but also organize conferences in collaboration with ISI that are used to radicalize Pakistani youth against India. The indoctrination of youth in POK will not only turn them into terrorists, but make theirs and their families' lives a living hell. Recently in Rawalakot, the Islamic Jamiat-e-Tulba held a big conference in which they invited the local Kashmiri youth from colleges and universities to join jihad against India and work for the accession of Union Territory Jammu and Kashmir with Pakistan. Apart from indoctrinating its youth, Pakistan has also been exploiting the resources in the illegally occupied territories of POK and Gilgit-Baltistan. Deforestation, water contamination and illegal land grabbing are among the major issues. The indigenous people of POK and Gilgit-Baltistan not only face issues like poverty, malnutrition and unemployment, but they have no opportunities to grow due to a lack of basic infrastructure, good education and health care. Pakistan's indifference towards the plight of the people it persecutes in POK and Gilgit-Baltistan has turned their lives upside down. They continue to demand the reunification of their land with India, as it is the only hope they can cling to. This is a joke. The people of POJK are asking for reunification of POJK with Mother India, and then like a knife, like a missile, Pakistan army throws its proxies
into every single university and college to make sure that they not only are present there as a threat to the forces that want to join India, but also to make sure that the jihad in Kashmir is a living reality. At a time when the entire population in Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan are engulfed in resistance against the fascist regime, it appears that Pakistan is more interested in turning a generation of young minds into religious extremists and terrorists. For decades, the people in illegally occupied Gilgit-Baltistan have continued to bear the brunt of the fascist Pakistani regime. The elderly people in illegally occupied Gilgit-Baltistan recently took to the streets to protest against the government for not increasing their pensions. Amid rising inflation, it has become very difficult for retired soldiers to meet their basic needs. They say government has been biased against the people living in Gilgit-Baltistan as they are considered second-class citizens. We have a report. Taking to the streets instead of celebrating their cherished festival Ramadan, the retired soldiers of illegally occupied Gilgit-Baltistan recently held a demonstration to demand a hike in their pensions. They called out the authorities for its apathetic attitude that has pushed them to the brink. Moreover, the retired soldiers in Pakistan are paid handsomely, but the retired soldiers in Gilgit-Baltistan get no pension. This comes at a time when inflation in Gilgit-Baltistan is at its peak, and being able to afford even basic commodities is a struggle for the people. मेरा दिल था कि सुबह तक हम यहाँ धरने दे दे। 9,000 से 15,000 10,000 तनख्वाह है, इससे बड़ा नहीं है। वहाँ पे जो ग्रेड 1 रिटायर हो रहा है उसको 28,000 30,000 दे रहे हैं। हमारा 2 रुपए बढ़ते हैं तो हमारा ऊपर वालों का पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। हमने इस 10,000 15,000 को भी बर्दाश्त किया है, लेकिन आज बर्दाश्त की उससे भी लबरेज हो। ये मसला मेरा अकेला का नहीं है, ये पूरी हमारी नॉर्दर्न एरिया का मसला है। ये जानबूझ के हमें जलील कर रहे हैं। With local administration working hand in glove with Islamabad and their indifference to the plight of locals, there is widespread resentment across all sections of society in Gilgit-Baltistan. However, the stooge government and the administrators in Gilgit-Baltistan are scrambling for higher political positions rather than taking some effective measures to solve the issues people face. This is not the first occasion when the residents of Gilgit-Baltistan have raised their voices against the corrupt government. Their previous resistances too were suppressed by the brute high-handedness of the Pakistani agencies. असल मसला क्या है इस वक्त देखें जी, तमाम की पेंशन जारी वो सारी है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी से जो लोग रिटायर हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में है या बाकी भी सुनने में आया कि तमाम में ये है, लेकिन बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पेंशन की बंदिश है। हमें ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि इस वक्त हमारे जो रिटायर सोल्जर्स हैं, गाजियान हैं, उनके बच्चों को स्कूल से रिमूव किया गया है। उनका कहना यह है, जो टीचर है या जो इंतज़ामिया है, उनका कहना यह है कि भाई आप लोग आए दिन आप लोग प्रॉब्लम हर महीने में क्रिएट करते हो और फीसें वगैरह नहीं देते हो। असल मसला ये हमारे साथ 1.5 साल से यही हो रहा है। तो हम हर एक के पास जा रहे हैं, कोशिश करते हैं, आप मीडिया हजरात के थ्रू हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अक्सर सबकी मिल रही, हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो लेकिन कोई किसी को भी टस समझ नहीं है। तो इस वजह से इस दफ़ा हमने बराबर ये कोशिश किया है कि हम बराबर एहतजाज करेंगे और जहाँ तक हमें जो जिस तरीके से लेना है हमें उस हिसाब से हम एहतजाज करेंगे। The brave people of Gilgit-Baltistan, however, continue to resist against all odds. They say
that the status of a second-class citizen will not be tolerated. Their amassed angst could any time turn into a rebellion against the fascist regime. Moving on. The authorities in Jammu and Kashmir are dedicated towards creating jobs for the socio-economic transformation of the Union Territory. Moving on the same lines, recently a day-long mega job fair was organized in the Pulwama district of Kashmir Valley with the motive of facilitating employment opportunities for youngsters in the region. Take a look. The government of Jammu and Kashmir is committed to providing the youngsters a platform to grab job opportunities and is striving to boost the economy of the Union Territory. Recently, a day-long job fair was organized by the District Employment and Counseling Center in the Pulwama district of South Kashmir. Its objective was to facilitate employment opportunities for the youth. The youngsters were given the chance to showcase their skill sets and ideas, which further added to the professional interaction between the employers and the job seekers. आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा वन डे जॉब फेयर था। हम इससे पहले भी बड़े सारे जॉब फेयर्स हमने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में किए हैं, तो उसी ज़मीन में आज का जो जॉब फेयर था जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को हम यहाँ पे बुलाएं, प्लस जो अनएम्प्लॉयड यूथ है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को उनको भी रोप इन करें, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके ताकि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स है, जो प्राइवेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे वैकेंसीज हैं प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के पास, तो वो यहाँ आके वो एग्जिबिट करें और अनएम्प्लॉयड यूथ को पता चले कि कौन सी प्राइवेट फर्म है, कौन सी जॉब्स हैं, क्या वैकेंसीज हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जहाँ पे दोनों एक साथ आके और उनको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। कैंडिडेट्स गेट टू नो कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और एम्प्लॉयर्स को भी पता चलता है कि जो यूथ है उनके पास कैसा स्किल सेट है। तो इस प्लेटफॉर्म पे दोनों आके अगर ऑन स्पॉट भी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। The fair saw participation of reputed private employers from insurance and business companies. Giants like LIC India, ICICI Lombard, Accure India Insurance and PNB MetLife were among the major participants. About 300 youngsters from Pulwama and nearby districts participated in the fair, and 149 job seekers with varied skills were shortlisted by different companies for jobs. The participants extolled the efforts made by the District Employment and Counseling Center Pulwama for organizing events like these, which help them in building a better future. मेरा पहला इंटरव्यू है आज का और मुझे लगता है जो कंपनी है वो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े शार्क्स है, जैसे एलआईसी है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ पे बहुत से जो यूथ है वो एडजस्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और जो एपीएन भी है और बाकी भी कंपनीज है, हर एक यूथ को यहाँ पे आना चाहिए, चाहे फिर वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पढ़ाई में है। फिर भी जो वो क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स भी है, फुल टाइम जॉब्स भी है, वो पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स भी कर सकते हैं। मेरी गुजारिश भी है सरकार से कि आप जो एफडीआई है और जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लाई और प्राइवेट सेक्टर को जितना हो सके उतना उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो यूथ है यहाँ का उसमें एडजस्ट कर सके, ताकि यहाँ का यूथ भी आगे जाके अपने फैमिलीज को थोड़ा सपोर्ट कर सके और अपनी फैमिली को चलाए। The job fair proved to be fruitful for the youth as it provided opportunities to qualified aspirants to register for jobs in multiple fields. Meanwhile, the government of Jammu and Kashmir has also been persistent in providing the platform and support to the youth for self-employment opportunities. The future of youth in Jammu and Kashmir seems to be headed in the right direction through the efforts of the government toward creating a market model based on new ideas and innovation. ये इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर
गवर्नमेंट एक्सपेंड करे हर एक लेवल पे टू द लोकल लेवल एज वेल, तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी तालीम याफ्ता है, तो उस हवाले से अब जब वो घर में बैठते हैं थोड़ा साइकोलॉजिकली एक आई वुड से कि वो बड़े कमज़ोर हो जाता है साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियल नीड्स को मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके लिए ये अगर इस तरह की जो आउटरीच एम्प्लॉयमेंट आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे हर एक लेवल पे, तो ये बहुत बेनिफिट है। The day-long job fair was a successful step toward encouraging the youth of Kashmir for job opportunities and providing them with the right tools and resources for the same. The government in the Union Territory of Jammu and Kashmir is committed to bringing world-class technology and automation systems to the functioning of civic services. With the launch of the Integrated Command and Control Centre, Jammu City is set to receive a revamp in the way civic services are delivered to people. A report. Jammu is fast-tracking the pace of development with the launch of ICCC, Integrated Command and Control Center under the Smart City Project Jammu. With the growing population, it becomes a difficult task for the administration to monitor all offenders or citizens who are involved in suspicious activities. Thankfully, the J&K government has a viable solution. The ICCC is expected to provide a management structure premised upon the collaboration of various departments of the Jammu Municipal Corporation, including transport, fire and police. Such a collaboration of various bodies will help with immediate and proactive action where it's required and further make the city a safe place for the residents. कंट्रोल सेंटर में हमारी डिफरेंट सर्विसेज जो हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है सो दैट हम बेहतर डिसीजन ले पाएँ। सो इसमें हमारा जो है यहाँ पर अभी हमारी फायर इमरजेंसी सर्विसेज, इसी तरीके से हमारी पब्लिक बाइक शेयरिंग, पार्किंग, इन सब सर्विसेज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसमें हमारा गार्बेज डिस्पोजल उसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड इसमें एक मेन फीचर हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसको इंटीग्रेट कर लिया गया है और आज की डेट में यहाँ पर हमारे ट्रैफिक के चालान जो है वो अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उनको यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी की मदद से उनको डिटेक्ट कर और यहाँ पर उनको चालान भी किया जा रहा है। सो इसके तहत हमारे पूरे जम्मू शहर में 600 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं जो ना एक और केवल हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे बट उसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है, हमारा जो सर्विलेंस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। The control center will allow monitoring and assessment of various civic services like waste disposal, traffic management and emergency services, which will serve as a single window solution to all administration problems. With over 600 cameras installed in every nook and corner of the city, the command center will keep an eye on any suspicious activity that could pose threats to the security in Union Territory. The intelligence system based on the collaborations of various bodies will bring a significant decline in violations like red light crossing, speeding, driving without a helmet and using mobiles while driving. It will also generate e-challans on these violations through automatic number plate recognition. Integrated Command and Control Center जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, it's not simply command and control center, it's integrated. So और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर हम एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके और उन पे हम उनकी जो सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसमें हम म्यूनसिपल सर्विसेज, क्योंकि दिस इज़ अ यूएलबी, तो म्यूनसिपल सर्विसेज के एरिया में जितनी भी हमारी सर्विसेज जो इम्पोर्टेंट है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वी हैव द एनवायरमेंटल इश्यूज, सो वी हैव सम सेंसर्स आल्सो। तो छोटी बड़ी मिला के कई सर्विसेज हैं जो हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन में कुछ हमने कर दी हैं, कुछ हम उसमें कोशिश कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। The
Integrated Command and Control Center will have representatives from every municipal department assigned. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। At the headquarters for better coordination of the management, ensuring the best of services to the public. It will assist in disaster management and crisis management through its quick information dissemination system on a real-time basis to facilitate faster action and better management. The move seems to be getting a lot of public appraisal for the efforts being undertaken by the authorities for the modernization of administration and management processes. The residents wholeheartedly approve of the decision to integrate technology in day-to-day operations to make the city a safe place. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जितने भी अलग अलग यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स के पास बिल्कुल कैमरास को जो इंस्टॉल किया गया है, कहीं ना कहीं ये सुधार लाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि हर एक नाके पे हर बार ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, इसलिए हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। असल में वो नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी जान को खतरा भी है, और साथ ही साथ अगर कोई और उस वक्त ग्रीन सिग्नल देख के क्रॉस कर रहा है तो वो अपोजिट गाड़ी को भी कहीं ना कहीं खतरा दे रहे हैं। तो ऐसे में जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो कैमरास लगे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, इन ट्रैफिक कैमरास की हेल्प से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पकड़ना इजी हो जाएगा जो किसी की एब्सेंस में कहीं ना कहीं वायोलेशन करने का काम करते हैं। हाईटेक कैमरास है, अचानक से ही आपको पता चलेगा, एक तो आप उल्लंघन कर रहे हैं वो तो जानकारी उसका तो डर है, लेकिन वो कैमरास अपने आप ही व्यक्ति की तस्वीर खींच लेते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। फिजिकली आपको वहां पे प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। हाईटेक टेक्नोलॉजी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस बार जम्मू कश्मीर में यूज किया गया है, जो काफी अच्छा है और मदद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलेगी। The launch of the Integrated Control and Command Center is certainly a feat for the government of Jammu and Kashmir and will go down in history as one of the best decisions undertaken for proactive and effective governance. And now in our special section of Incredible India, we'll take you to the capital city of Nagaland, where people celebrated the much-awaited Ailong festival with much zeal and fervour. Witnessing a joyful aura, the capital city Kohima saw a magnificent spring welcome with people of the Konyak tribe celebrating the festival with great enthusiasm. Konyak people in Kohima turned the spirit around as they draped their traditional attires and geared up for celebrations. Decked up in traditional tribal attires, people of the Konyak tribe sang and danced to the beat of drums as they gathered to celebrate Ailong, the premier festival of the community. This year, the festival was celebrated at the Naga Heritage Village in Kisama district. The festival was attended by Nagaland's Minister for Tourism and Higher Education, Temjen Inma Ailong, who was also the chief guest at the event. A very happy Ailong festival to all the Konyak brothers and sisters. This is truly one of the best celebrated festivals among the tribes of Nagaland, and the Konyaks have been very fervent to celebrate Ailong all over the state, and today we are also happy to know that in Kohima we are celebrating the Ailong festival in Kohima, where the confluence of not only the Angamis but also the confluence of all the tribes of Nagaland are here. And today's Ailong here, the Konyak Union Kohima has done a tremendous job, and it's a wonderful thing, and the food was great. So it's called the Mopong Hong Kong Union's food, no? So it was really wonderful.
The Elong festival celebrates the onset of spring, and locals seek divine blessings for good health and a bountiful harvest. Celebrated for almost a week, a number of different rituals take place during the course of the festival. A melodious singing performance was also organized, which was thoroughly enjoyed by the audiences. The celebrations are held in the first week of April, which usually coincides with the beginning of the Konyak New Year. This Owling Festival, it's welcoming the spring season, and especially we celebrate this Owling Festival seeking blessing for our good health and a bountiful harvest. And it is actually a pre-harvest festival. The first 3 days of the Elong festival are spent preparing for the festival by weaving traditional cloths, collecting the animals that will be sacrificed, and preparing food and rice beer for the festival. The most significant day of the Elong is the 4th day, known as Lingunya, when all Konyak tribe members dress up in their finest colorful traditional tribal clothing and jewelry. The festival's final 2 days are referred to as Linganya and Lingshanya. This time will be spent with family, cleaning the village as a whole, as well as individual homes. The identity of the people depends on the culture, the custom and the tradition. That is why we cannot ignore the identity. So by celebrating this Owling festival, it helps us to come together, to know each other, and even the youngsters, they come to know what our tradition is. It gives a good impact by celebrating this Owling festival for the younger generation. Of Nagaland's 17 officially recognized tribes, the Konyak people are the most numerous and well known due to their historical practice of headhunting. The Elong festival not only celebrates the arrival of spring season, but is also a beautiful show of the Konyak community's culture and lifestyle. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. Zalam kotvan vesiye yarasman talaylakti yarasman yar do nar khat zalam kotvan vesiye yarasman talaylakti yarasman.
Kashir, Ehsaas Kashmir.